Hello everyone. Today we discuss a topic of physics which is useful in NEET and JEE. The name of the topic, the truck box problem in friction. The method which I give, the tricky revision by formula. So, welcome to our online platform SP lesson. Without any wasting time, let's start it. So in the given figure, a block of mass m is kept on the truck and the truck is moved in the forward direction with acceleration a naught. The coefficient of friction between the truck surface and block is mu. So the first question is find the value of acceleration so that the box is just sliding. So in that type of question, firstly we see the point observe the block with respect to truck. So this is the observer and it see the block with respect to truck. Now a pseudo force m naught tries to move the block. So the pseudo force is applied in backward direction and then we apply the limiting condition. So here the friction force Fs maximum, which is called limiting friction force, so it is equals to m a naught, which is equals to Fs maximum, which is equals to mu into normal reaction. In that case the normal reaction is mg. So the ma naught equals to mu into mg. So we get a naught equals to mu s into z. The most important result. We understand this equation. If the value of mu s is 0.5, so we get the acceleration a naught equals to 0.5 into 10. A naught equals to 5. अगर इस ट्रक का एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड है, जस्ट स्लाइडिंग पोजीशन ऑफ ब्लॉक, अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम है, नो मूव. If a naught is greater than 5 meter per second square, the block move in the backward direction and fall like this. The next condition which we see, अगर ट्रक का एक्सेलरेशन a naught से कम हो या mu s g से कम हो तो क्या होगा, ये जो MAT का जो स्यूडो फोर्स लगेगा पीछे वो डज नॉट ब्रेक द वेल्डिंग. इट मीन्स ये स्टॉप रहेगा, नहीं चलेगा. तो नेचर ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा. और जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, तो जो Fs हो जाएगा वो MAT के इक्वल हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट सिचुएशन इज, अगर ट्रक का एक्सेलरेशन a नोट से ज़्यादा हो या mu s g से ज़्यादा हो तो बेल्डिंग ब्रेक हो जाएगी MAT की इक्वल्स टू. तो जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा. इस पोजीशन में जो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन आएगा वो ए रिलेटिव आएगा और जो फ्रिक्शन फोर्स आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा. तो फर्स्टली वी फाउंड ए रिलेटिव. सो applied force MAT minus stopping force kinetic friction, which is equals to MA. So MAT, which is equals to kinetic friction, which is mu k into normal reaction, which is equals to mg equals to MA. Cut the m and we get a relative, which is equals to a truck minus mu k into g. सेकेंड वी फाउंड दैट कितने टाइम बाद ये गिर जाएगा नीचे. देन यूज द काइनेमेटिक इक्वेशन s इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज 0. सो द लेंथ विच इज कवर्ड इज l. सो l इक्वल्स टू हाफ AT स्क्वायर. सो t स्क्वायर इक्वल्स टू 2l अपॉन a रिलेटिव. सो t इक्वल्स टू root 2l over a relative. Put the a relative value in this equation and we get the time, that how much time to get the leave the surface of truck. This is the three major problem of truck block problem. If you want any trick in physics, please say in the comment box and like, subscribe and share this channel. Thank you.